Okay, this is a moment of pride and honor to conduct first ever webinar of She Pharmacy. Can you hear me? Yes, we can. Yes, Okay, ma'am, thank you're you so much. audible. Thank you so much. Okay, we will begin the session with recitation. Thank you for your patience. Noor is born. ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو. Say, He is Allah. Jazakallah. Please get ready for national anthem. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو. Say, He is Allah, who is one. Allah Samad. Allah, the eternal refuge. لم يلد. He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد. Nor is there to him any equivalent. Jazakallah. Please get ready for national anthem. Okay. This is a moment of pride and honor to conduct first ever webinar of She Pharmacy. She Pharmacy is initiated by female pharmacists. Our motive is to ensure the proper role of pharmacists in healthcare system. As well as She Pharmacy is working really hard to identify the concrete steps that are required for the prosperity and growth of pharmacists in healthcare system. Our ultimate goal is not only to serve the nation through our services and skills, but also to empower women. I feel privileged to be part of this team.
On behalf of my team, I would like to welcome all of you in this first ever live webinar. I would like to welcome all of you in this first ever live webinar. Without any further delay, first of all, I would like to invite Mr. Imran Ali. Mr. Imran Ali is our chief guest. Mr. Imran Ali is a pharmacist with an MPhil in pharmaceutics. Please welcome Mr. Imran. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? सबके खैरियत है? बहुत शुक्रिया आपको, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और इस सेशन इतना अच्छा सेशन अरेंज किया। इंशाल्लाह उम्मीद है सब लोग एंजॉय करेंगे। Sir, would you tell something about pharmacy consultancy right here? Mr. Imran is a founder of Pharmacy Consultancy. Sir, do you want to say about something about Pharmacy Consultancy? Basically, Pharmacy Consultancy is an organization created by me. We are basically pharmacists, and I have done my MPhil in pharmaceutics from Dow College of Pharmacy. I'm the first pharmacist of Pakistan who have done MPhil in radio pharmacy. I have experience on nuclear pharmacy, nuclear medicine, all the things. So I started to provide same knowledge to all of you, my young colleagues. So for that, I need a platform, and I have created this for you people, where we are arranging different sections, where we are arranging, providing free notes and all the things. We are working from 2020. And still, alhamdulillah, we are going on, or we are nearly above 500 female pharmacists and also male pharmacists. So this was our just introduction. Hope so in the end we will enjoy further. Thank you, sir. My sincere gratitude to you, sir. And it is really an honor to have a very skilled and experienced pharmacist like you on board with us. Thank you so much. I will now invite Ms. Amatul Aziz to explain in detail about She Pharmacy. Amatul Aziz is the founder of She Pharmacy. She has done PharmD from Dow University of Health and Sciences. She is MPhil in Pharmacy Practice from JUW. She is also a former co-founder of Digipel. She is currently working as a co-founder at HUSN, and she has 8 years of experience in working in 3 hospitals and 2 industrial organizations. Please welcome our CEO and founder, Ms. Amatul Aziz. Thank you, Nayab. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Okay, first I would like to share my presentation. Just wait for a while. Let me check. Is it visible to everyone? Yes, it is visible. Go ahead. Okay. Thank you. Introduction to She Pharmacy. I am myself Amatul Aziz, founder and CEO of She Pharmacy. So we are going to discuss the agenda of this presentation as these are. So first we come to the mission and vision of She Pharmacy. She Pharmacy is, so the mission of and vision of She Pharmacy solely comprise on empowerment of female pharmacists by providing them a digital platform through which they can serve
the community remotely or staying at home. Our female pharmacists are competent, skilled, and experienced in their domain, and they need a support to serve the community. So starting with the tagline, caring beyond medicine. So first, I want to highlight the problems which we can see in the screenshot I shared here. Medicines are the critical things and have to be dealt very cautiously. Every medicine has to be passed through kidney, as we all know about this. Second thing is antibiotic can become resistant, and if we associate all these problems, then we know pharmacists must have a prominent and profound role being in healthcare. So She Pharmacy is providing the solution in a way that it is not only empowering female, but creating a platform which deliver medicines at doorstep, and also providing pharmacist related services in addition, like pharmacist consultation and pharmacist review on prescription. So if we go through the scope of pharmacists, these are the scope of pharmacists right here: awareness and education. We know people use medicines as meal, or people use medicine as pain suppressing tool. So pharmacists can help all the community to understand that medicines are not the tool to use for suppressing their pain, or medicines are not the meal, but it is a critical thing, or it is a chemical that can impact your body, on your body. So pharmacists have the potential or capabilities to let understand community these problems. Second, we are providing medicine delivery services. So we are providing quality medicines at doorstep, and we have fast delivery system services. Then we come to a third scope of services we are providing, that is pharmacist consultation. Pharmacists can provide review on prescription. If we are entertaining prescription, then we can at least review at our individual capability. We can review prescription, and we can provide pharmacist advice or pharmacist recommendation on each prescription. Besides this, if we have opportunity, then we can do pharmacist intervention as well. We are aiming to provide training and educational campaign as well. We are in future going to conduct seminar, conferences, training sessions for fresh graduates or fresh or fellow colleagues, or for community awareness as well. We are aiming to provide career counseling, guidance, and career development programs as well. Besides all these scope of services, we are aiming to provide new job opportunities for fellow pharmacists or fresh graduate as well, so we can help fellow pharmacists in job placement. If we compare our this service platform to others, then we are providing, we will be the ever first female-based pharmacist platform. We will providing free pharmacist consultation, guidance, and advice. We will provide drug and disease awareness and education programs. We have clinical pharmacists on board, and they can review and give advice to every prescription. And we will, inshallah, aiming to provide pharmacist intervention as well. So our operational roadmap, if we go through the service we are providing at doorstep delivery, we receive prescription, then our clinical pharmacists review the prescription, or if we have capability, then we can provide pharmacist intervention as well. Later on, we fulfill the order and let them deliver at doorstep. And beside these medicine delivery service, we are aiming to provide pharmacist e-regime or pharmacist advice on every prescription. That is the concern of the main concern of the She Pharmacy. So She Pharmacy USB would be online pharmacy that is accessible and affordable to everyone. We have patient-centered care approach, and we have trustworthy pharmacy services. We are focusing to spread the word of appropriate medication use,
and we will work on evidence-based pharmacy practice. Beside all this, if we focus on the pharmacist domain, then we are providing remote-based opportunities to pharmacists. They can work from home, and we will establish a management framework from the inside home, that is home. So if we see pharmacy is a well-rounded interdisciplinary profession, blending life sciences, math, healthcare, direct patient contact, computer technology, and business. So, the concept of the She Pharmacy can summarize in a way that pharmacists can serve at the front line of the healthcare system. It is imperative that they take on the role of clinical pharmacist in order to recommend and intervene with medications. She Pharmacy will offer the platform from which the community will specifically receive these services. So She Pharmacy is meet our team. Our team is right now comprised of pharmacists who are Nimra Mujib, Nida Naeem, Sadaf Jabin, and Dure Narab. Thank you, everyone. She Pharmacy is SCCP registered online platform, and we are welcoming through this platform to fellow pharmacists and fresh graduates to join this platform with us. You can email your CV at shepharmacyonline@gmail.com to be the part of this platform. You can go through our social media links, that is She Pharmacy Online. Thank you. Over to you now. Okay. Thank you, Amtul. It is really inspirational. We support your endeavor. I can proudly say we are the one who creates the opportunity rather than those who wait for the opportunity. We believe that She Pharmacy will pave way for many pharmacists. As we all know, pharmacists are drug experts, and drug utilization review is their very important domain. I would ask Ms. Numra Mujib to throw some light on drug utilization review. Ms. Nimra Mujib is a pharmacy graduate from DCOP, Dow University of Health and Sciences. She has done MPhil in pharmacology from HU Hamdard University. She has been a former lecturer at Diwan University. She is also awarded with Tadokoro Award 2022 for Best Poster Presenter in 14th Asian and Oceanic Epilepsy Congress. Please welcome Ms. Nimra Mujib. Over to you, Nimra. Assalamu alaikum to all of you. Thank you so much for providing me the platform over here and to discuss about the DUR. जब हम बात करते हैं DUR की, तो बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. वेट प्लीज. जब हम बात करते हैं बेसिकली DUR की, तो बेसिकली DUR है क्या? बेसिकली DUR इज मतलब हम बात करें कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम बेसिकली जितने भी अपने प्रिस्क्रिप्शन हैं उनको रिव्यू कर रहे होते हैं. अच्छा, जब हम बात करते हैं ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, व्हाट इज DUR? DUR इज अ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रग, first we have to know what is the drug. Drug is any chemical substance that produces or used to prevent, treat, diagnose or relieve symptoms of the disease or any medical problem. ठीक है ना? हम जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं इस एरा में या इससे पहले भी हमने जो भी ड्रग यूज किए हैं वो आइदर किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किए हैं. फाइन, ये हम सबको पता है. ठीक है, अब हम जब बात करते हैं किसकी, बेसिकली इस ड्रग की यूटिलाइजेशन की, तो ये यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? यूजुअली हमारे पास यूटिलाइजेशन हो रही है 3 लोगों के बिहाफ पे. एक सबसे पहले हमारा प्राइस प्रिस्क्राइबर जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है, सेकेंड वन कौन, जो कि डिस्पेंस कर रहा है, एक फार्मासिस्ट, और थर्ड वन कौन, वो पेशेंट जो कि इस ड्रग को यूज कर रहा है.
जब मैं बात करती हूँ आपके पास उस ड्रग की कंजम्पशन की, तो जो ऐसी ड्रग जो कि यूज़ हुई हमारे पेशेंट के बिहाफ पे, तो हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इसके जो अफेक्ट्स आए हमारी पूरी पॉपुलेशन पे या उस सर्टेन पेशेंट्स पे या उन सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे, तो वो पॉजिटिव आउटकम्स थे या नहीं थे, या उनके जो इफेक्ट्स हमें जो हमें रिक्वायर्ड डिजायर्ड इफेक्ट्स थे हमें वो मिल रहे थे या फिर नहीं मिल रहे थे। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली हमें किसके ऊपर हम काम करें, किस पे हम काम करें, किसके ऊपर, पेशेंट की हेल्थ केयर सिस्टम पे। जब हम बात करते हैं पेशेंट की हेल्थ केयर की, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बेसिकली किसके ऊपर काम करना होगा, अपनी ड्रग की यूटिलाइजेशन को रिव्यू करके। फाइन, आई थिंक सो एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। फर्दर आई मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द DOR एंड will define that। अच्छा, जब मैं बात करूँ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू पे, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू is an authorized, structured and ongoing process in which a prescriber, in which a pharmacist review the prescribed medication, dispense medication and use of the medication। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक पेशेंट के को जब एक प्रिस्क्राइबर ने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, उसके ऊपर हमें देखना है, और उसके अलावा जो कि एक फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस की उसके ऊपर देखना है, और फिर उसके साथ साथ उस मेडिकेशन का जो यूज था बेसिकली हमें उसके ऊपर देखना है कि जब उस पेशेंट ने उस मेडिकेशन को यूज किया तो कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए जो कि हमें डिजायर्ड आउटकम से हमारे मीट नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर काम कर रहा है कौन आपके पास, एज अ फार्मासिस्ट, इन तीनों डोमेन्स के ऊपर काम करते हुए उस तमाम ड्रग्स की यूटिलिटी को रिव्यू कर रहा होगा जो कि हम पेशेंट में, हाँ, अपने पेशेंट्स को दे रहे होंगे। और ये तमाम का तमाम प्रोसेस किसका है, क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर काम करे कि सबसे पहले आपके प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद आपके फार्मासिस्ट डिस्पेंस किया उसे रिव्यू करके, और फिर उसके बाद उसको पेशेंट ने यूज किया। आई थिंक सो एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। फर्दर डिले हम इसको फर्दर मूव करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग गाइड किया कि बेसिकली यहाँ पर हम रिव्यू कर रहे हैं अपनी मेडिकेशंस को जो कि यूज कर रहे हैं कौन, हमारे पास पेशेंट्स। जब हमने पेशेंट को यूज किया, पेशेंट ने वो मेडिकेशन, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, DOR में हम एक प्रॉपर प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया बना लेते हैं। जब मैंने एक प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया बना ली, प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया जो का वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। बेसिकली ये तमाम की तमाम पिछली अवेलेबल गाइडलाइंस के थ्रू या उन तमाम प्रैक्टिसेस के थ्रू जिनकी वजह से हमें अपने हेल्थ के सिस्टम में पॉजिटिव आउटकम्स मिले थे, अल्टीमेटली हमें उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर अपनी थेरेपी में, ड्रग थेरेपी में, चेंज ऑफ थेरेपी में चेंज ला सकते हैं, अगर सपोज जो मेरे आउटकम से वो मीट नहीं किए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा जैसा कि मेंशन है, इट्स अ रिव्यू अगेंस्ट अ प्रीडिटरमाइंड criteria that result in the changes to drug therapy when these criteria are not met। फाइन। अच्छा, अब मैंने बात की कि बेसिकली DOR है, पेशेंट की हेल्थ केयर के लिए है, ये सब कुछ है, ठीक है। बट यहाँ पर जो चीज इन्वॉल्व हो रही है मेजरली वो है क्या, आपकी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन और उसका मेडिकेशन डेटा, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस को रिव्यू कर रहे हैं, और उससे पहले सपोज आपके पास अभी करंट प्रिस्क्रिप्शन है वो तो है ही है, बट उसके अलावा जो पिछले मेडिकेशंस प्रोवाइड की गई हमारे को, उन तमाम के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिस्पेंसिंग। मैंने कहा यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया, किसने प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब करने के बाद उसको किसने एवेलुएट किया, एक फार्मासिस्ट ने उसे एवेलुएट किया, और फिर उसके बाद ड्यूरिंग हम बात करें उसके पास उसे एवेलुएट करने के बाद हमने उसके ऊपर एवेलुएट करने में देखा कि इसमें कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई ड्रग डिजीज इंटरेक्शन तो नहीं है। इन तमाम चीजों को हमने ऑब्जर्व करने के बाद उसे हमने डिस्पेंस कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर सपोज हमें यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा उसके प्रिस्क्रिप्शन में, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने करेक्टिव एक्शंस को लेकर प्रिस्क्राइबर से फीडबैक लेके अपनी जितनी भी इवैल्यूएशन है उनको फर्दर इवैल्यूएट आउट करके हम यहाँ पर उनके ऊपर काम करके अपने पेशेंट को अपने प्रिस्क्राइबर से कम्युनिकेट करके उसके रेजिम में चेंजेस ला सकते हैं। अब मैंने बात की जब DOR की, तो DOR बेसिकली इसको हम सिनोनिमस करते हैं विद द डिफरेंट टर्म्स ऑफ जैसे कि ड्रग यूज एवैल्यूएशन, मेडिकेशन यूज एवैल्यूएशन एंड मेडिकेशन यूज मैनेजमेंट। ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं इसी से इन तमाम के टर्म के साथ सिनोनिमस हो जाती हैं। फाइन, विद द
आगे चलते हैं, जो हम बात करते हैं पर्पस ऑफ द DUR। हम बेसिकली DUR परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? जब मैंने कहा मैं DUR परफॉर्म कर रही हूँ तो उसके सर्टेन रीजंस हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मुझे अपने पेशेंट की हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ स्टेटस को एनहांस करना है, उनको जो ड्रग्स हम दे रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट और सेफली उन तक पहुंचाना है। ठीक है सॉरी। अच्छा, उसके बाद अल्टीमेटली हम यहाँ पर काम करेंगे पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, पेशेंट के रिकॉर्ड के ऊपर, जितने भी पॉपुलेशन के से पहले रिकॉर्ड होंगे उन सब के ऊपर काम करते हुए हम जो है वो अपने अपने तमाम के तमाम ड्रग्स को उन तमाम पेशेंट्स तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा अगर कोई कोई कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लानी है, हमें कोई सेफ और इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि जिसकी सेफ्टी और एफिकेसी ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग से बेहतर है, तो हमें यहाँ पर उसको भी चेंज ला सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें यहाँ पर क्या करना है, जब जो भी मेडिकेशन सपोज मैंने दी, एक कैंसर पेशेंट है मेरे पास, उसको मैं मेडिकेशन दे रही हूँ, आई नो कि उस मेडिकेशन के सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स होंगे। जब सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स होंगे तो वहां पर उन एडवर्स इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए भी मुझे सर्टेन मेडिकेशन और रिक्वायर होगी। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ द केयर जो है ना मेडिकेशन की, उसको रिड्यूस करना है ताकि हम सेफ और इफेक्टिव यूज ऑफ द ड्रग को एनहांस कर सके, पेशेंट के कंप्लायंस को एनहांस कर सके, पेशेंट हेल्थ स्टेटस को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। अल्टीमेटली हमें करना क्या होगा, इन तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट करना होगा, एवेलुएट करना होगा, और फिर ये तमाम के तमाम किसको इसका बेनिफिट किसको होगा, हमारे पास एक इकोनॉमिक और थेरेप्यूटिक आउटकम एनहांस होगा। और हम यहाँ पर अपने विद द हेल्प ऑफ बीइंग अ फार्मासिस्ट, हम यहाँ पर आपके पास इंटरवीन करके उस तमाम की तमाम क्लिनिकल गाइडलाइंस को देखते हुए उन तमाम के तमाम उस प्रोसेस को और एनहांस करके अपने पेशेंट के हेल्थ केयर स्टेटस को एनहांस करेंगे। फाइन। उसके बाद चलते हैं जिसके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ DOR के ऊपर। जब मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ DOR की, तो यहाँ पे मैंने कहा, इससे पहले भी आप लोगों को कहा कि हम काम किसके ऊपर करें, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और मेडिकेशन के यूज के ऊपर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पास इंप्रूव करेगा ये DOR का जो प्रोसेस है, आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू का, ये तमाम के ऊपर काम करते हुए इनको और बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा। सिमिलरली अगर बात करूँ आपके पास यहाँ पे मेजरली की रोल किसका है, कौन अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली अपना एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, बस एक फार्मासिस्ट। यहाँ पे एक मेजर रोल जो है एक फार्मासिस्ट का है, जो कि आपके पास एरिया ऑफ थेरेपी मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज रखने के साथ साथ आपको गाइड करेगा कि आपके पास आपको किस तरीके से मेडिकेशन में फर्दर आप अपने जो अपने पेशेंट है उसकी मेडिकेशन की किस तरीके से चेंजेस लाकर हम अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अलावा साथ साथ क्या करेगा, अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब लाइक एजमा में मुझे पता है ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हैं हम, एजमा में अगर सपोज पेशेंट की कंडीशन बेटर नहीं हो रही है ब्रोंकोडायलेटर्स की से, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आइडेंटिफाई करना है उस फार्मासिस्ट को कि एक्चुअली ट्रेंड्स क्या चल रहे थे। तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस आपके पास कहाँ और होगा, इसी DOR में होगा। अब ये ट्रेंड्स हम डिफरेंट डिजीज स्टेट के बिहाफ पे भी कर सकते हैं या फिर ड्रग स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कि सपोज कोई ड्रग ऐसी मार्केट में आए कि उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स आ रहे थे तो हम वहां पर मूव कर जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने कहा एजमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमें क्रोनिक मेडिसिन रिक्वायर होती हैं, तो वहां पर जो काम कर रहा होगा, कौन सा प्रोग्राम काम कर रहा होगा, यही DOR प्रोग्राम काम कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि ये तमाम का तमाम प्रोसेस हो रहा है किसके ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर। किसकी कोलैबोरेशन से, एक फार्मासिस्ट की कोलैबोरेशन से, आपके पास हेल्थ आपके प्रिस्क्राइबर्स की कोलैबोरेशन से। अल्टीमेटली हम क्या करें, अपने पास इम्प्रूव कर रहे हैं ड्रग थेरेपी ऑफ आवर पेशेंट्स। अच्छा, जब हम क्लासिफाई करते हैं DOR को, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं DOR को 3 कैटेगरीज में, प्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट एंड रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव, एज द नेम इट मेंशन्स, इट्स बेसिकली हमने मेडिकेशन को डिस्पेंस करने से पहले जो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन आएगा, बेसिकली ये किसके लिए हो सकता है, एक आउट पेशेंट के लिए भी हो सकता है, इन पेशेंट के लिए हो सकता है, यूजुअली आउट पेशेंट्स के लिए होता है। अच्छा, जो भी मेडिकेशन मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, मैं उसको इवेलुएट आउट करूंगा। इवेलुएट आउट करने के बाद मुझे कोई इसमें ड्रग
ड्रग ड्रग इंटरेक्शन नजर आएगा, ड्रग ड्रग डिजीज इंटरेक्शन नजर आएगा, या अदर कोई भी डोज का प्रॉब्लम नजर आएगा, तो यकीनन मैं अपने प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करूंगा, वहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ थेरेपी रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक्शन परफॉर्म कर लूंगा। सिमिलरली अगर मैं कंकरेंट की बात करूँ, तो कंकरेंट में हमारे पास हम जो ऑनगोइंग, जो कि आपके पास इन पेशेंट्स होते हैं, जो आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके ऊपर जब हम बात करेंगे तो यूजुअली इसमें हम कंकरेंट की बात करते हैं, कंकरेंट की बात करते हैं कि ऑनगोइंग मॉनिटरिंग कर होते हैं ड्रग की, कि अदर इस डोज के चेंज की वजह से इस पेशेंट में कोई सर्टेन इसके सर्टेन एडीआरस में कोई इफेक्ट तो नहीं आया, या कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग पैरामीटर जो कि इस ड्रग की वजह से आ रहा होगा, तो हमें वहाँ पे उसको मॉनिटर करना होगा। फर्दर हम मूव करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव की तरफ। तो जब मैं बात करती हूँ रिट्रोस्पेक्टिव की, तो रिट्रोस्पेक्टिव में ऐसे प्रेस्क्रिप्शन या ऐसा मेडिकेशन डेटा इन्वॉल्व होगा जो कि हमारा पेशेंट ऑलरेडी रिसीव कर चुका होगा, मतलब एक सर्टेन टाइम तक उसने वो मेडिकेशन ली, तो फिर उसके बाद उसने लेने के बाद जो इफेक्ट्स आए, उन तमाम के तमाम इफेक्ट्स को हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे, इस रिट्रोस्पेक्टिव डीओआर प्रोग्राम में। फाइन। अच्छा, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग prospective DOR, concurrent DOR and retrospective DOR. As I've already told you, prospective क्या होगा, before medication dispense, concurrent क्या होगा, ongoing monitoring of the drug therapy जो कि हमारे पेशेंट का उस वक्त चल रही होगी, और retrospective को वो होगा जिसमें कि आपका पेशेंट रिसीव कर चुका होगा, और फर्दर अगर मुझे अपने अगले पेशेंट्स के लिए उसमें फ्यूचर में कोई चेंजेस लाने होंगे, तो वहां पर हम वो कंसिडर करेंगे। फाइन। अच्छा, कुछ इश्यूज हैं वो मैं इससे आगे भी एड्रेस करूंगी, इसमें बहुत, इस पिक्चर में बहुत ज्यादा अच्छे क्लियर नहीं है, आगे मैं स्लाइड में और आगे से अच्छे से आपको क्लियर करके समझाती हूँ। जब मैं बात करती हूँ प्रोस्पेक्टिव डीओआर की, तो प्रोस्पेक्टिव डीओआर मैंने आपको पहले बताया कि किस 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 डोमेन पर आ रहा है। बेसिकली हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने प्रिस्क्रिप्शन को evaluate out कर रहे हैं before dispensing, evaluating before dispensing, you have to focus on it, evaluating before dispensing। जब मैंने डिस्पेंसिंग से पहले इवेलुएट कर लिया कि आइदर यहाँ पे कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं दी जा रही जिसके डोजेज में कोई एरर हो, या फिर आपके पास पेशेंट के एज के रिगार्डिंग उसकी डोज में कोई चेंज तो नहीं ला सकती मैं, कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई सेम मेडिकेशन तो नहीं जा रही आपके पास डुप्लीकेट थेरेपी, लाइक एक एनसेट प्रिस्क्राइब कर दी गई ऊपर नीचे कोई और एनसेट प्रिस्क्राइब कर दी गई है प्रिस्क्राइबर के एंड पे, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल देयर इज एन एरर इन दैट प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम क्या करें, बेसिकली कि आपके पास कौन काम करेगा, आपके पास प्रोस्पेक्टिव डीओआर प्रोग्राम आपका, ठीक है। अच्छा, जो कॉमनली इश्यूज एड्रेस होते हैं वो यहाँ पर वो कौन कौन से होते हैं, आपके पास क्लिनिकल अब्यूज, मिस यूज, आपके पास कोई मिस यूज या अब्यूज तो नहीं हो रहा है मेडिकेशन का, अगर सपोज हम बात करें। उसके अलावा ड्रग डिजीज कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग डोजेज मॉडिफिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग पेशेंट प्रिकॉशंस, आए आपके पेशेंट्स को एलर्जिक तो नहीं है, लाइक बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से। सिमिलरली अगर कोई फॉर्मुलरी सब्स्टिट्यूशन है, कोई थेरेपेटिक इंटरचेंज कर सकते हैं मेडिकेशन में, तो वहां पर हम यहाँ पर बेसिकली किसके ऊपर काम करेंगे, या फिर अगर इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, लाइक 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी थी बट उन्होंने 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, तो दैट मींस यहाँ पर हम बेसिकली आपके पास किसके ऊपर काम करेंगे, टोटली प्रोस्पेक्टिव डीओआर में। यहाँ पे हम अपने प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिए थे यहाँ पे हम इसमें चेंज ला सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं हम इसके ऊपर। जब मैं बात करती हूँ प्रोस्पेक्टिव डीओआर की, तो इसके बाद अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा था कंकरेंट डीओआर। जब मैं बात करती हूँ कंकरेंट डीओआर की, तो बेसिकली ये वो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आके आपके पास अब एक अलर्ट करो अपने प्रिस्क्राइबर को कि ये जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया है, या आपने जो ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे पेशेंट में चल रहा है, यहाँ पे इसकी वजह से कोई ड्रग इंटरेक्शन आ रहा है, कोई डुप्लीकेट थेरेपी रिपोर्ट हो रही है, या फिर कोई एक्सेसिव या इनसफिशिएंट यूज ऑफ डोजिंग हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे इन पेशेंट्स होंगे हमें उनके ऊपर काम करना होगा, और यहाँ पर हम उनके साथ काम करते हुए उन पेशेंट्स के अंदर बेटरमेंट, उनके सर्टेन जो भी जीन चल रहा होगा उसके अंदर बेटरमेंट ला सकते हैं। सिमिलरली मैंने कहा आपके पास कि यहाँ पर आपके पास मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल की, तो आपके पास फार्मासिस्ट जो है वो राउंड करेगा कंटिन्यूसली अपने हॉस्पिटल्स में, रिव्यू करेगा उन तमाम के तमाम प्रिस्क्रिप्शंस को, और अगर कोई कंटिन्यूअली हमें कोई इंटरेक्शन नजर आ रहा होगा या कोई डुप्लीकेट थेरेपी नजर आ रही होगी, तो वहाँ पे आपके पास फार्मासिस्ट किसको अलर्ट करेगा, आपके प्रिस्क्राइबर को अलर्ट करने के बाद इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करेगा जो कि हमें मेंशन है, जिसके ऑलरेडी ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डोज मॉडिफिकेशन, ड्रग पेशेंट प्रिकॉशंस, ओवर यूटिलाइजेशन एंड थेरेप्यूटिक इंटरचेंज। इन तमाम के ऊपर आपका कौन काम करेगा, बेसिकली आपका फार्मासिस्ट ही काम कर रहा होगा और आपके प्रिस्क्राइबर को अलर्ट करेगा। फर्दर
हम चलते हैं किसके ऊपर, रेट्रोस्पेक्टिव के ऊपर। जब मैं बात करती हूँ रेट्रोस्पेक्टिव की, तो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव के आपके पास यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने आपको उससे पहले बताया कि हमारा पेशेंट मेडिकेशन को यूज कर चुका है, तो अब हमें क्या करना है, प्रिस्क्राइब जो ऑलरेडी सॉरी जो आपके पास जो ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑलरेडी पिछले प्रिस्क्रिप्शन हैं या फिर कोई मेडिकेशन डेटा है, उनकी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है कि आइदर सपोज मैंने ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की थी तो इसके कितने अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स मिले, अगर ये मेडिकेशन डिस्पेंस हुई थी तो उसके पेशेंट ने क्या कैसे रिव्यूज दिया मैं कि इसके कितने अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स थे, पेशेंट कंप्लायंस एनहांस हुई थी नहीं हुई थी, उसके हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट मिली थी नहीं मिली थी। बेसिकली हम यहाँ पर काम करेंगे किसके ऊपर, रिट्रोस्पेक्टिव। यहाँ पर हम बात करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव व्यू। तो यहाँ पर वो जो फार्मासिस्ट होगा बेसिकली पैटर्न्स को डिटेक्ट कर रहा होगा कि अगर ये मेडिकेशन दी गई, इस मेडिकेशन की वजह से कितने अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स मिले, तो अल्टीमेटली हम अपने फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे किस तरह के पेशेंट में हम फर्दर ये मेडिकेशन दे सकते हैं। तो इश्यूज यहाँ पर हम कहेंगे डिस्कस कर सकते हैं, वो बेसिकली प्रॉपर्टी जेनरिक का यूज है, क्लिनिकल अब्यूज और मिसयूज है, इनअप्रोप्रिएट ऑफ ट्रीटमेंट है, थेरेप्यूटिक डुप्लीकेशन। अच्छा, जब मैंने कहा कि मैं ये तमाम के तमाम DUR प्रोग्राम को 3 कैटेगरीज में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उसके साथ साथ मैंने कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे अथॉरिटीज ने कन्फाइन कर दिए कि जब भी आप DUR प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो आपको इन पैरामीटर्स को कंसिडर करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, लाइक आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द ऑप्टिमल यूज, मेजर एक्चुअल यूज, इवैल्यूएट, इंटरवीन और इवैल्यूएट करना, इंटरवीन करना और इवैल्यूएट करना DUR प्रोग्राम को, रिपोर्ट करना फर्दर फाइंडिंग्स को। जब मैं बात करती हूँ डिटरमाइन द ऑप्टिमल यूज की, तो यहाँ पर आपके पास फार्मासिस्ट के पास एक सर्टेन क्राइटेरिया ऑलरेडी डिफाइन होगा कि जिसमें आपके पास पेशेंट ने आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ फार्मासिस्ट ने आइडेंटिफाई करना होगा कि जब जो भी मेडिकेशन दी गई थी वो अपने तमाम की तमाम प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया को में फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी। सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है, वहाँ पे हमने उसको दी एक आपके पास कोई एंटी डायबिटिक ड्रग जो न्यूली मार्केट में आई थी, और वहाँ पे हमने वो ग्रुप ऑफ पेशेंट में रन करी। तो अब हम यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करेंगे बेसिकली उसके HbA1c करेंगे, ग्लूकोज लेवल्स की मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस को देखेंगे। तो ये तमाम की तमाम हम कहाँ पर करेंगे, बेसिकली आपके पास आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द ऑप्टिमल यूज। अच्छा, अब जब मैंने वो डिटरमाइन कर लिया उसके बाद अल्टीमेटली मैं क्या करूँगी, मेजर द एक्चुअल यूज। मेजर करने के लिए मुझे कोई ई सिस्टम जनरेट करना होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा जिसमें मैं अपने तमाम के तमाम प्रिस्क्रिप्शंस को पुट ऑन कर रही होंगी और उनके पॉजिटिव आउटकम्स को मेजर करते हुए हाईलाइट करूंगी कि इस ड्रग के इतने सर्टेन पॉजिटिव इफेक्ट्स से, ठीक है ना। सपोज जो भी यहाँ पर हम बेसिकली जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनके रिकॉर्ड को एल्गोरिथमिकली लेके चल रहे होते हैं और उनको देख रहे होते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी जो हमारा प्री डिटरमाइन करते हैं उसको मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम किसके ऊपर चलेंगे, एवैल्यूएशन के ऊपर। जब मैं चलूंगी एवैल्यूएशन के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा जैसे कि मैंने एल्गोरिथम बना लिया होगा पिछले स्टेप में, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि कितना परसेंट वो एल्गोरिथम हमारे पेशेंट से क्राइटेरिया तक मैच किया या फिर नहीं किया। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगी जितने भी ऑप्टिमल कंपैरिजन करूंगी बिटवीन द ऑप्टिमल, एप्रोप्रिएट एंड एक्चुअल यूज ऑफ द पैटर्न ऑफ दीस ड्रग्स, ठीक है ना। फर्दर चलेंगे उसके ऊपर इवैल्यूएशन के ऊपर, और इवैल्यूएशन में हम उसके बाद जो है वो इवैल्यूएट करने के बाद हम इंटरवीन करेंगे, और इंटरवीन करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट्स को जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी उन सबको डिटरमाइन करने के बाद हम उनको गैदर ऑन करेंगे। गैदर ऑन करने के बाद एक रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ बनाएंगे जिसमें हम फर्दर एंड अब यहाँ रिपोर्ट बनाने के बाद जितने भी अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने ये सर्टेन चेंजेस लेकर आ गए। फाइन। अच्छा, यहाँ पे मेरा सेशन एंड होता है। जितनी भी इम्पोर्टेंस थी वो है कि जो ऑन द बिहाफ ऑफ एज अ बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं आप लोगों को दे सकती थी, मैंने आपको दिया है। इसके अलावा कोई और से क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कैन यू send in the chat box. I will reply you back later, inshallah. Fine, it's all from my side. Thank you so much. Over to
Thank you, Nimra. It was really informative, and you explained it very well. As a pharmacist, we know to minimize drug interaction and to minimize drug adverse effects, pharmac- pharmacist intervention is really important. To further elaborate it in detail, Ms. Nida Naeem has joined us. Nida has done PharmD from Dow College of Pharmacy. She is enrolled in master program in Malaysian University. She has worked as a hospital pharmacist at Rafe Arm Hospital, and she was also a trainee pharmacist at Digipal Pharmacy. So over to you, Ms. Nida Naeem. Thank you, Nayab. Assalamu alaikum, everyone. Let me give you some time. I'm going to share my presentation with all of you. Is it visible? Yes, it is visible. Yeah. Okay. Go ahead. Okay. Thank you, Nayab. I'm Nida Naeem, a clinical pharmacist at She Pharmacy. The topic of my discussion today is the pharmacist intervention. For the introduction, She Pharmacy is a clinical female pharmacy serving team who provide online medication, who provide online medication with a free pharmacist consultation. Here in She Pharmacy, we try to cover all aspects related to the patient care that providing medicines to the doorstep with much discounted rates and guide you as well that how you can take a medicine and how to store your medicine. And if a person forget to take the medicine, we as a pharmacist, we can encourage them to how to take the medicine. Okay, who are the pharmacists? Pharmacists are the healthcare profession who provides the patient to the right who specializes in right way to use and to store, preserve, and provide medicines. Pharmacists ensure that the medicines prescribed to the patient are suitable, advising patient about the medicine and including how to take them, and if educate the patient about the what possible side reactions may occur, and answering the question related to the answering patient's question either related to the illness or the medicine. Clinical pharmacy. According to the European European Society of Clinical Pharmacy, clinical pharmacy is a health specialty which describes the activities and services of the clinical pharmacist to develop and promote the rational and appropriate use of medical products and services. But according to the American College of Pharmacy, a clinical pharmacy is that area of pharmacy concerned with the science and the practice of the rational medicine use. So, what are the rational medicine use? The patient medicine appropriate to their clinical needs. A clinical pharmacy is the health discipline in which the pharmacist provides the patient care that optimizes the medication therapy and promotes the health, wellness, and disease prevention. Pharmacists can educate patients how to use the medication properly and take action by changing medication, offering advice when they see anomalies. What are the four responsibilities of the pharmacist? They prepare, obtain, store, secure, distribute, administer, and dispose of the medical products. They provide the effective medication therapy. They maintain and improve the professional performance. They also, pharmacists can also contribute to improve the effectiveness of the healthcare system and public health. So let's discuss some about the medication adherence and why it is very much important. The World Health Organization defines the medication adherence that as the degree to which a person's behavior corresponds with the agreed recommendation from a healthcare provider. Adherence to the therapy is the primary determinant of the success. Medication, as we know that when we see a prescription that patients are taking, patients are comorbid, they have comorbid condition and they are taking polypharmacy. The patient hesitate to take the medicine because they saw there too many medications. So we encourage, as a pharmacist, we encourage the patient to take the medicine and follow the treatment plan to get the maximum effectiveness from the medicine. And we educate patient that if you skip, change, or ignore your medicine, it can be bad for your health.
we advise patients to take the medicine and right doses, like at what, like if the prescription says that take the dose, take the medicine 2 times daily. So we recommend to stick to that time and stick to the time and do not skip the dose. And the use of weekly planner, and we for medication adherence, we give helpful tips like use a weekly pill box, create reminders, and ask your healthcare provider or team, and having a list of your medicines to your every health visit. Pharmacist intervention. Pharmacist-initiated pharmaceutical intervention is described as any recommended modification to the pharmacological treatment. According to that study done by Hussain et al., intervention by the pharmacist is warranted to detect these medication therapy problems, after which solutions for these problems can be invented or drug therapy optimizes for each patient. Any professional activity that is done by the pharmacy directed towards improving the quality use of medicine and resulting in a recommendation for a change in the patient's medication therapy, means of administration, and patient taking behavior. Why actually we need the pharmacist intervention? A study done by Glidiso et al. Supports the concept as well as the need of pharmacist intervention. Efforts have principally taken the form of pharmaceutical intervention, wherein a pharmacist takes action to address the non-optimal drug use in order to improve the patient's quality of life and prevent the further morbidity and mortality. Here in She Pharmacy, we are planning to provide the e-prescription to the patient. For e-prescription, we can increase the patient care effectiveness and efficiency. How our pharmacists can do intervention? These are some simple steps through which a pharmacist can do pharmacist intervention. There are like recommend patients to stick to one pharmacy. When the patients fill their prescription from different pharmacies over a period of time, so it becomes very much difficult for pharmacists to track the patient's medication and the treatment as well. So the risk of the drug interactions also increases, and at that step, we recommend patient to stick to one pharmacy, ensure that all potential prescriptions are reviewed by the same pharmacist. This helps this helps them to track the pattern, the patients, and reduce the chances of the adverse events, and provide informed therapeutic recommendation. The second step can be taken is asking the right question. So we can check the patient's medication adherence by asking the right question to the patient, like how do you remember to take your medication? Like how would you know if you missed a dose, and how do you organize your medication? To ensure to such question, by asking such question, one can help, like pharmacists can help to find customized solution to specific non-adherence issues. This also creates the shift in the patient's perspective that a pharmacist is more than just a source of a medication information, but is also a resource for solving the adherence related issues. Recommendation of the recommend a patient to maintain the medication list. Pharmacists also encourage patients to maintain list of medication like they take, such as the list should contain all information regarding their medicine regime, including the names of the drug they are taking, the medical condition they have, and for the doses and the timing for the dosage and the timings of at what time they take the medicine. The recommendation of using of dosing cards and pill dispenser and medication apps. Creating a dosing card with essential information is regarding a patient's medication, such as the patient pill name and the treatment it is for, dosage timing, and on image, if possible, can be a very helpful for patients taking multiple medications. We nowadays, as you know, the technology advances, so different medication apps are available. We encourage or we educate the patient that how to use these medication app for your benefit, and for push-up notification, it's time to take each medicine. Reminders can be set for different medication multiple times a day, different days of the week, and a different dosage and number of the pills per dose as required by the pharmacist. Like there are different pill boxes came in the market. They are the plastic containers basically, and in which they have the days and the timing is mentioned. And we encourage the patient to place the medicines which they take throughout the day in these pill boxes for as a reminder, so that they don't forget to take the medicine. And simplify the patient's medication. Pharmacists can review prescription while filling it to confirm that the drug dosing schedule is as simple as possible.
Pharmacists can communicate with the patient about the adverse effects they experience and they consult with the physician to suggest suitable alternatives. While doing this, we minimizes the adverse effects and doing simplification are excitingly successful strategies that boost up medicine adherence. Some examples include like do not take the iron supplements, antacids, or calcium supplements at the same time because we advise them to take the 2 or 1 hours apart to get the full benefit from each medicine. As we know that in a hospital setting, and it's a common practice that the patient are given the omeprazole, pantoprazole, proton pump inhibitors. We encourage them to take the medicine 30 to 60 minutes before eating up meal, permits the maximum effect of the medication in the inhibiting of the production of gastric acids. We also advise patients to not share their antibiotics with others. And we can also advise them, do not save them for the later. Talk to the pharmacist about safely discarding the leftover medication and do not take antibiotics prescribed for someone else. Conclusion, a pharmacist is basically a healthcare professional who gives the expert medicine advice to the patient. Pharmacists can intervene and can reduce medication, many medication-related errors, commonly known as a drug-related problem, by adjusting the medication dosage form or frequency. Pharmacy intervention can also give benefits to patients by increasing the patient medication adherence. Thank you, and any questions is welcome. You can ask your question in chat box. That's all from me today. Over to you, Nayab. Thank you, Nida. It was really informative. Now it's time for question and answers. You can ask any questions if you have in chat box, or you can turn on your mic and ask the questions. Any question regarding She Pharmacy, regarding job in She Pharmacy, regarding the 2 lectures that are delivered by Nimra and Nida will be entertained, and any question related to pharmacy profession will be entertained. Okay, I would request Mr. Imran Ali to please say a few words. Over to you, sir. Someone has asked, how can we become part of She Pharmacy? Amtul, can you answer this? I would prefer Sir Imran is going to answer this. Okay, Sir Imran, please answer this. So we can't hear you. Maybe I can answer it right here. Any female pharmacist specifically, and any pharmacist can be the part of She Pharmacy in a way that they can send their resume. But actually, we are present on digital media, so we will conduct some kind of training then and provide them opportunity to be the part of She Pharmacy, but they have to be very competent, and they have to be very serious. If they are capable enough, then they can be the part of it. So please send your CV at shepharmacyonline@gmail.com or pharmacyconsultancy021@gmail.com. Okay. Someone has asked, someone has asked that is this platform is solely a community pharmacy based or also associated with any hospital for inpatient entertainment? Yeah, we are actually in discussion with institutions and with hospital setup as well, and we are going to be place our pharmacists, She Pharmacists, in that specific location to get training and to get expertise in different domain like OPD, pharmacy, or in clinical setup. But in that scenario as well, they can serve being She Pharmacist, and they can serve in a way that they can be a community pharmacist, because we are providing medicine at doorstep. So the thing is that
if any pharmacist doesn't have any experience in clinical pharmacy or in a hospital setup, then they can't deal any prescription. So they have to be an exposure of institution, hospitals or retail. So we are going to place our own pharmacists at that position, at that location. And if in a control scenario they can get experience, then they can serve the community in an open way as well. So we are going to place our own pharmacies in different institutions, in different hospitals as well. Okay. The next question is, I want to contribute to this project. We'll send you my resume. Okay. We will receive it. Sorry, I We'll can't send. hear clearly. Okay. Can you please? I am repeating it again. What are the opportunities for fresh graduates in She Pharmacy? Dr. Kiran Asif has asked. So the fresh pharmacist has opportunity in a way that they have to have a training platform. They get training over here, then they become such capable that they can easily deal, or they can easily entertain prescription. In that scenario, they become experienced in that level. So we will start, if any freshers join us, we will start with the training of that fresher in two domains. Number one is social media, and so that they can facilitate the customer or patient. And in other scenario, we will place that fresher to the hospital or institution, and if they get trained in both domain, then they can have opportunity in She Pharmacy to be a community pharmacist and serve independently. Okay, someone has asked, is this a remote job or a campus job? Hira Jamil, it is It is completely remote. actually, well, it is actually a remote job. It is Okay. actually a remote job, but everyone can serve being at home. But with the time, if there is a demand of to come office or to come at different position, then they have to come over there, like in campaigns or in seminars or in such kind of promotional campaigns or training sessions. Wherever they need, they have to come physically, but they can serve being at home. Okay. Further questions will be entertained by Sir Imran Ali. Over to you, sir. Assalamualaikum. आवाज आ रही है? Are you listening? Voice जी clearly? जी सर आ रही है. बच्चे, listen. This is a basically online setup pharmacy. Like suppose we have a different software in our mobile app. They are basically this setup is started by these four female pharmacists. They are I am explaining this all system in normal language, means all making you more clear. Or suppose these four pharmacists are specialized in community pharmacy, in pharmacology, in clinical pharmacy, right? So they are basically expert in dealing with the medicine. So we started online setup in which they are providing detailed interaction, drug interaction, all the things you can say about the drug candidate. Each and every information you can get by this from them, because they are experted in prescribing, in dispensing, or you can say in providing the clear picture of all the medicines, or suppose their interaction with taking with food, without food. So they have now want to start this setup furthermore, you can say, increasing to the different hospitals. Now, in this system, what they are doing, they are hiring you, okay, and then some prescription will be sent it to you. Then you have to correct that prescription, okay. Now, their work is that they will deliver the selected medicine. Means, for example, I am taking Panadol, paracetamol, and aspirin simultaneously. Now, if doctor have written simultaneously on prescription, before buying medicine, I will first send to them, and they will evaluate it, and they will cut either paracetamol or aspirin. So means basically they will evaluate the first. They have a different. These four pharmacists will evaluate the prescription. Then second one will ask the pharmacy to deliver.
Now this is a combination of these four female pharmacists. So now they are want to expand this system to their whole in Karachi. So for that, they will hire you, and same they will also first give you training. This is not you can say physical job. This is an online based job. From that, or suppose if they are cracking the prescription, then delivering. From that, in future they will provide you some sort of you can amount. But basically, or initially, they will give you this training. Like after giving training, after you are have a fully command on this side of how to handle the prescriptions, then we will arrange some physical meetings about this. And inshallah, very soon we are going to arrange this free pharmacy in a physical layout form, where you will find only female pharmacists, only female manager, all these things. So, but that was later on part. But now, initial days, initial startup, these four and including us, we are providing just like in previous for 2 or 3 days we were knowing about the pharma guide or these are things. These are online pharma guides. They will give you detailed information about the prescription, detailed information about the drug, food drug interaction. With yes, I will tell you. Means detailed instruction each and everything. Now, what is expected from you that you must have also command on pharmacists, on medicine, for drug interaction. So from them you will also learn because all of them have a post-graduate specialization in pharmacology and clinical pharmacy. So they are basically for help to evaluate the prescription. Now, as Dr. Raza tell us how this ideas or how these interactions are has been evaluated. So same training you will also be given when you are joining to us. Now we will tell you, we will ask, we have your CVs, we have your conditional, even your all the detail on your CV. We will call you, we will message you, we will have selected a day, we will text you or email you about the day of interview. In the interview, we will ask some basic questions regarding the pharmacy before joining us. So we need the competent one because this is our new setup. We want to emerge in market. Already we have many competitors in market that are doing this type of job, but this is something different. As there are many companies in world that are run by women. So this pharmacy system is also run by them. So their work is to providing the services, community-based service, but online, without any physical layout until now. So as this business goes further, they are going to start this layout in a physical form. But before that, they want to promote their business by online system. As they have promoted each and everything, in future we are also collaborating with industries that providing us such type of medicine that we can deliver according to your name. So means this is basically a startup of a setup by these four pharmacists that they are working. So in this setup, you will learn inshallah a lot. And second one thing is you can send your CVs by emailing us. We will evaluate it. We will have a check over them that for which pharmacist is feasible and working with us. This is not a physical permanent job, right? This is an online based job. We will call you once in a month or anytime in campus, in our campus about the evaluation or having a presentation or having a discuss of meeting. But if it is not feasible for you, you can also go for online. So this is very easily work for you. You can easily join us, and you can earn in the future. First, because we will train you, and then we will start to give you prescription. Till now, I think they all have created their 50 or 60 prescriptions in which they deliver the medicine on reasonable price, means near about 50 to 25% discount from the local market. So means low cost with pharmacy community services. So their main motto is this one. Means they are providing the service, they are providing the medicine. First of all, they are providing authentic medicine. Second, they are providing the safe medicine. So this system
new in Pakistan. They have started. So I hope for them that they will, inshallah, prosper, or they will enhance the system, because we need the pharmacists like you. As this will not, I think, you can say, disturb your routine work, but this system will enhance your prescription cracking setup. So I hope you have all understand the scenario of this presentation and what we are saying. So you can join them. They have a CV, they have an email address. Any one of them, you can share your CVs. Well, in the last, I'm telling you that this setup is new in the beginning. We are something different from the conventional pharmacy setup. In this, there is you can say, there is a physical layout, and they just dispense you medicine without telling you any interactions of the drugs, without telling time duration, without telling right dose, without telling you how to you can say increase the shelf life of medicine, either to place in fridge or in room temperature. So this all system will be provided by them free of cost. Just they will create your prescription without any taking charge, but and also they will deliver the medicine to your doorstep. So this all setup is started by them, and I'm very much happy that the females from Dow Promise of College have started such type of business by their own. So this is nowadays only the business, and all these things are working very well. So you can also join them. You can also work with them. You can also join their meeting, and these all are female. So it is safe for you. You can anytime have a collaborative meetings, and that's the thing that they have started this setup. This is the first session of them. So they will, inshallah, in soon prosper in this setup. So I hope you have understanding all the things. If you have questions, you can ask. Thank you, sir. Thank you. You are deliberating in a very good way. Thank you. So I hope you have all the knowledge. Look, this is initial setup. They are going to give the physical, and think about them when this is the only pharmacist in Pakistan that's run by female pharmacists. No, there is a male pharmacist. Even all the medicines is dispensed by the female. Means, for suppose some sort of medicine in Pakistan, the females are very much, you can say, not feasible to ask. Or even very much there is some type of embarrassment feeling in the villager people or rural areas. The people are very much feeling shy that we will ask from the male. So this setup is run by female pharmacists. Anything they can ask, even male persons can ask, because we are healthcare providers. But for female, it is more convenient. Or suppose there is a university in Karachi, there is Jinnah University for women, for example. This is only university in Karachi that is for female. So those who have some sort of issues to study co-education, so means they have a problem. So now the system have introduced new universities that only female can be have for study. Same setup, we are encouraging this, that only we have a female pharmacist in the pharmacy. Every female, even rural or urban areas, people can ask or seeking help easily, and they will, you can say, learn very clearly about these medicines. For suppose some medicine have a side effect on their body, so they are asking to male pharmacists by feeling embarrassment. But if they have a pharmacist by female, so it is easy for them to ask anything regarding their medicines, because very minimum side effects is known by the retailer pharmacist. But they are Thank you so much, professionally. sir. Thank you so much. Sincere gratitude This to is you, our sir. You you explained it really well. So you can send your CVs at this email address, shepharmacyonline@gmail.com and pharmacyconsultancy021@gmail.com. Last question, which I would like to entertain, is that if any patient is iron deficient, that is it okay to directly take iron supplements? I would say that it depends upon the iron levels. If it is very low, then you have to take iron supplement, but not for longer period of time. Take it for for 1 month and continue your diet. You have to continue an iron rich diet
to maintain the iron level of your body. Thank you very much, all of you, for being patiently listening to us, and thank you for attending the session. We will continue doing such sessions in future as well. Our aim is to groom pharmacist community. Our aim is to serve pharmacists and to serve the nation through our skills and services. Thank you so much. Allah Hafiz. Signing out for today. Thank you so much. That is much information. Hafiz.